और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों के एक और इंटरेस्टिंग आज के एक और न्यू भाई वीडियो में। तो गाइस आप लोगों ने टाइटल समय के बाद पता चल ही गया है, ये मेरे पास जो फोन है दोस्तों, जो कि Realme P4, जो कि इस फोन के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ भाई करके दिखाऊंगा, जो कि भाई फ्री फायर मैक्स के अंदर 120 FPS का भाई गेम प्ले टेस्ट। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है इस फोन के अंदर AI बूस्ट की मदद से आप लोग भाई 144 FPS तक भाई आप लोग गेम प्ले वगैरह कर सकते हो दोस्तों। और उसके साथ ही साथ दोस्तों 144 FPS का भी मैं आप लोगों के साथ गेम प्ले दिखा दूंगा कि भाई इस फोन के अंदर कैसे कैसे FPS वगैरह चलता है, फोन हीट होता है कि नहीं, वो मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर दूंगा। आप लोग भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आप लोग भाई हर चीज़ पता लग जाएगा। तो चलो गाइस, वीडियो को इंट्रो में ज़्यादा ना बोलते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दो भाई, मैं हूं सुदीप तो और वाचिंग माय टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को तैयार पैर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ भाई फ्री फायर के मैक्स के ऊपर, जो कि भाई आप लोगों को पता ही है, मैंने भाई वादा किया था कि भाई आज 120 FPS का गेम प्ले टेस्ट करूंगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे जो हाइपर बूस्ट का जो ऑप्शन है इसको ऑन करके 144 FPS का भाई मैं गेम प्ले टेस्ट करके दिखाऊंगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये जो मेरे पास जो फ़ोन है Realme P4, तो आज इस फ़ोन के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम स्टेटस वगैरह ऑन कर लेते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है कि भाई Realme के अंदर आप लोगों को इन डिस्प्ले आप लोग इन बिल्ट आप लोगों को यहाँ पे FPS मीटर और हीट मेजरमेंट मीटर वगैरह आता है, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो 33 डिग्री पे पहुँच रखा है। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे जो डिस्प्ले के अंदर चल के आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई 120 FPS का गेम प्ले। तो उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो कि भाई अभी 38% भाई बैटरी पहुँच रखा है। उसके बाद भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे CS का गेम प्ले वगैरह करके दिखाऊंगा। उसके बाद जाके मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा, जो कि भाई GT मोड वगैरह ऑन है और FPS भी भाई चलने स्टार्ट हो गया, जो कि भाई आप लोगों को हर एक चीज़ पता लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे FPS देता है कैसे कैसे क्या करता है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं AI मोशन को ऑन कर लेता हूँ, ये सब को ऑन कर लेता हूँ, तो आप लोगों को भाई बेटर समझ में आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो चलो भाई आप लोग भाई पूरा गेम प्ले को एंजॉय करो, और मैं मिलता आपसे भाई लास्ट का जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसके अंदर। तो चलो आप लोग भाई गेम प्ले को एंजॉय करो। 144 142 ऐसा ही भाई FPS आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोग FPS के अंदर ध्यान देना, मैं आप लोगों को गेम प्ले के अंदर ध्यान देके फ़ोन आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं, ओवरऑल मैं आप लोगों को कंक्लूजन के अंदर बताऊँगा। तो चलो आप लोग गेम प्ले को पूरा इंजॉय करो।
तो गाइस इसके साथ ही साथ भाई ये जो गेम प्ले है भाई, गेम प्ले को ख़त्म करते हैं। मैंने भाई ज़्यादा मतलब जानबूझ के मैंने ये जो क्लास स्क्वाड रैंक का जो गेम प्ले है वो मैंने किया है, क्योंकि भाई मतलब मेरे को बीआर का जो गेम प्ले हो ना वो भाई ज़्यादा खेलने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि भाई मैं अकेला खेलता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं खेलता हूँ और भाई मैं ही एमवीपी बन गया हूँ। तो इसके वजह से मैं ज़्यादातर टाइम ये जो जो सीएस का जो रैंक गेम प्ले है ये मैं खेलते रहता हूँ। तो ओवरऑल जो गेम प्ले है भाई आप लोगों को खेल देखने में कैसा लगा एक बार जोर से बताना। 3-4 मैंने मैच खेल लिया है। और अभी अगर टेम्परेचर का बात करें जो कि भाई 42 डिग्री पे पहुंच रखा है, अरे भाई दिखा दे यार, जो कि 42 डिग्री पे पहुंच रखा है। उसके साथ अगर भाई बैटरी का बात करें जो कि भाई 30% पे अभी पहुंच रखा है। तो चलो भाई अभी एक दो भाई खेलेंगे, ज़्यादा नहीं खेलेंगे भाई, आप लोगों को ज़्यादा किल देखने के लिए नहीं मिलेगा, हो सकता है एक ही दो किल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भाई सीधा मैं आप लोगों के साथ जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसके अंदर मिलूंगा। तो चलो भाई आप लोग बीआर का जो एक दो किल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो भाई आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना, और उसके बाद जाकर सीधा मैं आप लोगों के साथ बीआर का जो गेम प्ले है उसके अंदर बढ़ूंगा दोस्तों। Double takedown. Double takedown. Triple takedown. Quadra takedown. तो खैर गाइस इसके साथ ये जो गेम प्ले है भाई, गेम प्ले को तो भाई यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, क्योंकि भाई ये जिस फ़ोन से भाई रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है ना उसका भी भाई बैटरी मतलब बैटरी भी ख़त्म हो गया, जो कि भाई फ्लैश वगैरह नहीं जल रहा है, तो भाई आप लोगों को अच्छे से शायद से भाई नहीं दिख रहा होगा। तो अगर भाई यहाँ पे बात करें अगर फ़ोन का टेम्परेचर को लेके, जो कि मैं दिखा देता हूँ, जो कि भाई 43 डिग्री पे पहुँच रखा है। इतना सारे गेम प्ले के बाद भाई बैटरी अभी 26% पे पहुँच रखा है। तो ओवरऑल जो 144 120 एफपीएस का जो गेम प्ले था, तो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जोर से कमेंट में शेयर करके जाना, और ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बता रहा हूँ दोस्तों। तो तब तक भाई आप लोग इंतजार करो। तो दोस्तों आप लोगों को तो मैं ओवरऑल जो है भाई लाइव दिखाई दिया हूँ, जो कि एफपीएस वगैरह की बात करें। उसके साथ ही साथ भाई मैं ज़्यादातर टाइम भाई क्लास को रैंक वगैरह खेला है, जो कि मेरे को भाई बहुत ही बढ़िया लगता है क्लास को रैंक वगैरह, और बीआर रैंक वगैरह मैं ज़्यादा देर तक नहीं खेला है। तो ओवरऑल आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा एक बार जरूर से कमेंट में बता के जाना। और उसके साथ ही साथ इस फोन का जो परफॉर्मेंस था, जो कि मैं पहले ही शुरू होते ही मैं आप लोगों को जो इस फोन का जो बैटरी परसेंटेज था वो मैं दिखा दिया था, और फोन का जितना टेम्परेचर अच्छा पहले के टाइम के अंदर वो भी मैं दिखा दिया हूँ, और ख़त्म होने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। तो ओवरऑल जो आप लोगों को जो कंक्लूजन है वो समझ में आया कि नहीं एक बार जोर से कमेंट में बता के जाना। मैं तो भाई आप लोगों के साथ हर एक चीज़ भाई लाइव शेयर कर दिया हूँ दोस्तों। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं भाई, अभी बात करते हैं, नहीं तो भाई बहुत सारे लोग बोलेगा कि भाई ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं ही भाई क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई इस फ़ोन के अंदर भाई बहुत ही बढ़िया आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, मेरा जो टेस्ट करने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जितने भी सारे जो टेम्परेचर वगैरह हो रहा था दोस्तों, जो कि मैं आप लोग तो देख ही रहे हो कि भाई
वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो उसके चलते भी हो सकती है कि भाई फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पंखा वगैरह नहीं चला रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बनाते वक्त कहीं भाई पंखा चलाऊंगा, है ना। तो उसके चलते भी हो सकती है कि थोड़ा बहुत भाई फ़ोन हीट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हीट नहीं हो रहा है। आप लोग अगर भाई पंखों के नीचे खेलोगे या फिर भाई जो गेमिंग फैन वगैरह जो आता है, जो कि आप लोग पीछे के साइड से लगा के खेलोगे, तो उतना ज़्यादा हीट शायद से नहीं होगा दोस्तों। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन था कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा आप लोगों का अगर कुछ भी डाउट, कंक्लूजन, क्वेरी रहता है तो भाई मेक से जोर से मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई सोल्यूशन हर एक चीज़ कर दूंगा यार। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते भाई आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो, मेरे को पहली बात है, आज से तरह वीडियो देखना चाहते हो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ गेमिंग टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग, उसके साथ ही साथ ऑनेस्ट ओनर रिव्यू, हर एक चीज़ मैं लेके आता हूँ। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आप लोगों के हिसाब से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे दोस्त के साथ भाई जोर से इस वीडियो को शेयर कर देना, जो लोग भाई फ्यूचर के अंदर ये फोन लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी फोन लेना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को जोर से शेयर कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं कुछ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय।